Hello everyone, welcome back again. So student, today in this session we will discuss about the chapter number 3rd, grade 5 chapter number 3rd, that is how many squares. Okay, so first what is the meaning of the square? A square which has 4 sides and all sides are equal. A square which has 4 sides and all sides are equal and each angle is 90-degree angle. Okay, it's your square. So there is one example of a square, that red one. Okay, this red square is the example of a perfect square. So in the previous session I already told you how square is different from rectangle. Okay, and how we can measure the area and the perimeter of a square and rectangle by using formula. Okay, now here we will find out the area or perimeter of a square by using the dots. Okay, so let's start from the page number 34. So in your page number 34 there is one question number 1. Okay, they said draw rectangles by using 12 such squares, just like this red one. So you have to draw rectangles by using 12 स्क्वायर्स. ओके, आपको ऐसे रेड स्क्वायर से, जैसे आपको 1 रेड स्क्वायर है, आपको ऐसे 12 रेड स्क्वायर, जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में मेंशन है, ऐसे आपको 12 स्क्वायर्स को यूज़ करके आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट जस्ट काउंट 12 rectangles. So it's your 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it's your first rectangle. Now 3 into 4, because 3 multiplied by 4 is equals to 12. So 3 by 4 is the another square. 1, 2, 3 and 4. So it's your next square. Here 2 boxes are left, so I am drawing the third rectangle by using these boxes. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It's your third rectangle. Okay, you can draw it by using scale also. Okay, now it is 1, 2, 3, 4. So again 4 by 3, it's your fourth rectangle. Fifth rectangle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so 1, 2, 3, 4 and 3. And the last one is here. And the last 6 boxes are left. Okay, so in the next question they said how many rectangle could you make. आपने कितने rectangle बनाए हैं? So just count. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So total number of rectangles are 7. Each rectangle is made up of 12 equal squares. So all have the same area. सारे के सारे rectangles 12 squares 12 squares से बने हैं. So obviously सबका area क्या होगा? Same होगा. Just like अगर आप इनकी बाउंड्रीज़ को देखें तो सबके अंदर 12 स्क्वायर्स हैं. ओके, सो बाउंड्रीज़ के अंदर जो पार्ट कवर्ड होता है उसको एरिया कहते हैं. तो सब बाउंड्रीज़ के अंदर 12 रेक्टेंगल्स 12 स्क्वायर्स कवर हो रखे हैं. इट मीन्स सबका एरिया सेम होगा. विच ऑफ दीज रेक्टेंगल हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर. अब आपको इनका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है और देखना है कि किस रेक्टेंगल के पेरीमीटर सबसे ज़्यादा हैं. सो हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट करते हैं? हाउ वी विल फाइंड आउट द पेरीमीटर? जस्ट ऐड ऑल द बाउंड्रीज. फॉर एग्जाम्पल, in rectangle number 1 the sum of all boundaries are 6 plus 2 plus 6 plus 2. Okay, 6, 2, 6 and 2. So total 6 plus 2 plus 6 plus 2 are 16. Yes, so answer is 16. Now here in rectangle number 2 it's 3 plus 4 plus 3 plus 4. So 3 plus 4 plus 3 plus 4 is 14. So here the perimeter is 14.
Similarly, perimeter of rectangle number 3 is 14, perimeter of rectangle number 14 is 16, perimeter of rectangle number 5 is also 16, and 6 and 7 is 14. Longest perimeter is 16 and the smallest perimeter is 14. Okay. Now come to the next page, in page number 35. In page number 35, they given some stamps which are pasted on the graph paper. Okay, and by using the squares we have to find out the answer of some questions. Okay, so question number 1 is, how many squares of 1 centimeter side does stamp A cover? So we have to find out the number of squares covered by each stamp. Okay, so in stamp A, the number of squares are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. So it is 18. In stamp B, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So total number of squares are 8. Just count all these squares. 1, 2, 3, 4, 5, 6. In stamp C, it is 6. In stamp D, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It is 12. In stamp E, it's 4, and for stamp F, it is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It is 12. Okay. Now come to the question number A. How many squares of 1 centimeter side does a stamp cover? So 1 centimeter size के कितने squares को cover किया stamp A ने? 18. Answer is 18. And stamp B, so stamp B ने 8 squares cover करें, so answer is 8. Which stamp has the biggest area? सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स किसने कवर किए हैं? स्टैम्प ए ने. सो सबसे ज़्यादा एरिया भी स्टैम्प ए ने ही कवर किया होगा. ओके, सो आंसर इज स्टैम्प ए. हाउ मेनी स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर डज द स्टैम्प ए कवर? सो आंसर इज 18. 18 स्टैम्प्स कवर किए हैं ना, सो आंसर इज 18. Now question C is, which two stamp have the same area? So stamp D and stamp F. Okay, here you can see that stamp D and stamp F both have 12 centimeter square area. So answer is D and F. How much is the area of each of these stamps? दोनों का area कितना है? So it is 12 square centimeter. The area of the smallest stamp is, सबसे छोटा stamp कौन सा है हमारा? Stamp E. Okay, so area क्या है stamp E का? 4 centimeter square. The difference between the area of the smallest and the biggest stamp is, सबसे छोटे और सबसे बड़े stamp के बीच का difference कितना है? So the biggest stamp is 18 centimeter square and the smallest one is 14. So difference is 14 centimeter square or 14 square centimeter. Okay, so there is one activity and it's your homework. Okay, activity: collect some old stamp, place them on the square grid and find their area and perimeter. By using the previous video, आपको previous video को check करना है, उसमें देखना है कि आप squares और centimeter, उसमें देखना है कि आप perimeter और area कैसे find out करते हैं. Same, just like this activity, you have to paste some stamps on the grid paper or graph paper. Okay, and according to this activity you have to find out the perimeter and area of stamps. Okay, आपको सेम ऐसे एक्टिविटी आपको सेम ऐसे ही स्टैम्प्स को पेस्ट करना है और उनका एरिया फाइंड आउट करना है. इफ़ स्टैम्प्स आर नॉट अवेलेबल, सो जस्ट टेक प्रिंट ऑफ सम स्टैम्प्स. ओके, आप कुछ या फिर आप उसको कहीं से नोटबुक्स वगैरह से कलेक्ट कर सकते हैं और आपको ये एक्टिविटी आपके घर से करनी है और आपको करके देखना है कि कैसे हम ग्रिड्स का यूज़ करके, ग्राफ्स का यूज़ करके स्टैम्प या फिर किसी भी और चीज़ के एरिया और पेरीमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ पेज नंबर 36. इन पेज नंबर 36 you have to guess something which has the biggest area, one of your footprint or the page of this book. Okay, आपके पास बुक है, बुक को देखिए,
तो किसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा, बुक का या आपके किसी एक पैर के फुटप्रिंट का? फुटप्रिंट मीन्स पैरों के निशान. सो ऑब्वियसली द एरिया ऑफ बुक इज़ ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द फुटप्रिंट्स. ओके, एक पैर के निशान से एक बुक का एरिया ज़्यादा बड़ा होगा. ओके, नेक्स्ट इज विच हैज़ द स्मॉलेस्ट एरिया, 2 5 रुपीज़ नोट टुगेदर और 100 रुपी नोट. ओके, तो एक 100 रुपी का नोट वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, 5 रुपीज़ के 2 नोट्स ज़्यादा एरिया कवर करेंगे. सो ऑब्वियसली 5 रुपीज़ के 2 नोट्स ज़्यादा एरिया कवर करेंगे. सो सबसे कम एरिया जो कवर करेगा दैट इज़ 100 रुपीज़ नोट. ओके, क्वेश्चन सी इज़ लुक एट अ 10 रुपी नोट. एक 10 रुपये का नोट आपको देखना है. इज़ इट्स एरिया मोर देन द 100 स्क्वायर सेंटीमीटर. क्या इसका एरिया जो है वो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो सकता है? यस और नो? 100 स्क्वायर सेंटीमीटर मीन्स 10 इंटू 10, 10 लेंथ और 10 ब्रेथ. ओके, सो इज़ इट पॉसिबल? नो. ओके, so 10 rupees note is less than 100 centimeter square, not more than 100 centimeter square. Clear? Question D is the area of the blue shape more than the area of the yellow shape? Why? क्या ये blue shape का area yellow shape के area से ज़्यादा है? No. Why? Because as you can see here, these two rectangular part, okay, same as these two parts. Okay, blue के दोनों पार्ट जो है उनका वो येलो के दोनों पार्ट्स के इक्वल हैं. Suppose it is your part 1 and it is your part 2. Okay, if you shift part 1 just like that here, so it become blue one. Okay, so as you can see here, the area covered by the part 1 is equals to the area covered by part 3, and the area covered by part 2 is equal to area covered by part 4, and even these all parts are equal. Clear? So the area of the square and the area of the triangle are same. Okay, next is the perimeter of a yellow shape more than the perimeter of the blue shape? Why? क्या yellow shape का perimeter blue shape के perimeter से ज़्यादा होगा? Okay, suppose this one is 4, so all sides are 4, so it's 4 4, total 8. The perimeter of the yellow shape, the square is 4 into 4 16 centimeters square, and here it is 8, and this one, these two are more than 4 because the diagonal, and these are because it's diagonal, so these diagonals are greater than 4. So obviously the perimeter of the triangle is greater than the perimeter of the yellow shape. जो आपका triangle है उसका shape जो होगा वो आपके squares, उसका perimeter जो है वो आपके square से ज़्यादा होगा. आपके blue triangle का perimeter आपके yellow rectangle square से ज़्यादा होगा. Clear? Now, how big is my hand? मेरा हाथ कितना बड़ा है? Trace your hand on this square sheet on the next page. आपको next page में पेज नंबर 37 में एक स्क्वायर शीट दी है, आपको वहाँ पर अपना हाथ पेस्ट करना है, आपको वहाँ पे अपना हैंड्स को ड्रॉ करना है, just like that. Okay? और फिर आपको दिए हुए क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करना है. ओके, सब एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन नंबर 1? हाउ विल यू डिसाइड हुज हैंड इज बिगर, योर हैंड और योर फ्रेंड हैंड? व्हाट इज द एरिया ऑफ योर हैंड? व्हाट इज द एरिया ऑफ योर फ्रेंड्स हैंड? ओके, सो सपोज
it's your hand, and you have to find out the area of your hand. So just count all the squares covered by your hand. It's the area of your hand. आप जैसे सारे स्क्वायर्स को काउंट कर लोगे, ये आपका एरिया फाइंड आउट हो जाएगा. लिसन वन थिंग, जस्ट लाइक हियर दिस वन. इसमें आप देख रहे हैं इस स्क्वायर का बहुत स्मॉल पार्ट जो है वो कवर नहीं हुआ है. सो जस्ट कंसीडर इट वन. हम इस स्क्वायर को पूरा कंसीडर करेंगे. क्लियर? बट द नेक्स्ट स्क्वायर इज़ हियर. इसका बहुत छोटा सा पार्ट ही कवर हुआ है, सो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे. क्लियर? सो जिस स्क्वायर में आपको दिखेगा कि हाफ या हाफ से ज़्यादा कवर हुआ है, उसमें आप उसको वन कंसीडर करेंगे, और जिसमें बहुत छोटा सा पार्ट ही कवर हुआ है उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, और उससे हम अपने हैंड्स के एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, सो आपको एक्टिविटी घर पे करनी है. यू कैन डू इट विद योर पेरेंट्स ऑल्सो, योर सिस्टर ब्रदर्स ऑल्सो. ओके, सेम दे आर यूजिंग दिस एक्टिविटी फॉर एनिमल्स ऑल्सो. ये इस एक्टिविटी का यूज़ करके एनिमल्स की फुटप्रिंट्स को भी मेज़र कर रहे हैं.